Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। So much good, invest in fair. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. The numbers that you can call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. So go ahead, if you have any queries pertaining to personal finance, economics, business and stock market news, do call us. I'm V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देंगे आपको ताज़ा आर्थिक समाचार और आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके सवाल सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक या शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सवाल कर सकते हैं या जानकारी चाहते हैं तो जानकारी भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको जानकारी प्रोग्राम में नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विश्लेषक जयंता दास। जयंता, कार्यक्रम में आपका स्वागत। शुक्रिया विशाल। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं वी रवि कुमार। The headlines: benchmark domestic stock closes on a flat note. Sensex settles at 40,802. Nifty ends at 12,048. Brent crude prices hover around $62 per barrel and gold prices slip to 38,718 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार लगभग अपने पूर्व स्तर पर बने रहे। सेंसेक्स 40,802 पर बंद, निफ्टी 12,048 के स्तर पर रहा। ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $62 प्रति बैरल के आसपास रहे और दिल्ली सराफा बाजार में सोना सस्ता होकर 38,718 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। शुरुआत शेयर बाजार से ही कर लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज लगभग अपने पूर्व स्तर पर बंद हुए। निजी बैंक और ऑटो शेयरों में नुकसान से टेलीकॉम शेयरों की बढ़त पर भी रोक लग गई। दूसरी तिमाही के कमजोर जीडीपी आंकड़ों और वाहनों की लगातार कम होती बिक्री से बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों पर दबाव देखा गया। इसके अलावा रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति आने से पहले निवेशकों ने भी एहतियात बरती। उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 8 अंक की मामूली बढ़त से 40,802 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8 अंक घटकर 12,048 पर आ गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.77% नीचे आ गया और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.39% की गिरावट दर्ज हुई। We'll continue talking about the Sensex story, but before that, we are joined by our first caller today, MG Krishnan from Delhi. Krishnan sahab, welcome to Market Mantra. Good evening, sir. Can you please turn down the volume of your radio? Yeah. Okay. Yeah, thank you. Please go ahead. Yeah, sir. Actually, I want to know the safety and the security of the investment in small finance banks. Mm-hmm. I don't know anything about the status of the bank, but they used to give us more interest rate. Okay. Yeah. So there's this new category which has come up in the last few years, which is small finance banks, which typically have an arbitrage of almost 100-200 basis points over a commercial bank. So there are a lot of questions that we get in Market Mantra. Is it safe? Can we take a risk on that? So what would you say? Well, typically as an investment opportunity, it depends on what his investment appetite is, number one. Number two, as a prudent investor, what I would always suggest is if you have issues and concerns and queries, it's always good to divide your eggs
amongst a host of, not only just limited to small finance banks. Even you can go to a normal commercial bank or a PSU bank if that's a flavor. Regulatory norms, and they are being followed by the rule of the law of the land at this point of time. They are monitored and regulated, and they have norms which they have to meet too. So a direct answer is it's always good to divide your investments in that sense. That's always a very prudent policy. जी, हमारे अगले कॉलर वीरेंद्र दिल्ली से हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो हेलो वीरेंद्र, लगता है हमारे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। Touch with Virendra. Virendra, are you there with us? No, I don't think we are having the contact with Virendra right now. Let's go back to Sensex. That's a very interesting developing story, Jayanto. Sensex and Nifty today closed on a flat note after a seesaw trade as losses in auto and private bank stocks offset rally in telecom counters. Investors turned cautious, weighing weak GDP numbers and continued drop in automobile sales, bringing banking and auto sector stocks under pressure. Besides, participants also took a defensive stance ahead of Reserve Bank's monetary policy meet. After a volatile day of trading, the 30-share BSE Sensex closed marginally higher by 8 points at 40,802. On the other hand, the broader NSE Nifty settled 8 points down at 12,048. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index fell 0.77%, while the Small Cap Index fell 0.39%. Both these indices underperformed the Sensex. The market breadth was tilted in favor of sellers. On the BSE, 1,051 shares rose and 1,501 shares fell. A total of 190 shares were unchanged. On the Sensex chart, Bharti Airtel emerged as the biggest gainer with a rise of 3.7%. Reliance Industries, which is the parent firm of RGO, rose 2.3%. Apart from Airtel and RIL, other top Sensex gainers were Asian Paints, Kotak Bank and Mahindra. On the other hand, Yes Bank was the biggest loser in the pack, dropping 6.2%. It was followed by Bajaj Finance, ONGC, Sun Pharma, Maruti Suzuki and Tech Mahindra falling up to 3%. Subdued sales numbers of automobile companies led to fall in their shares. Sectorally, Telecom emerged as the top performing BSE index, surging over 2.6%. Other sectoral gainers on the BSE were energy, metal and basic materials, rising by up to 1.28%. On the other hand, auto, IT and healthcare indices witnessed a decline. Of the 19 sectoral indices, 4 ended in the green and 15 in the red. We are joined by a regular caller from Delhi, Satish. Satish, welcome to Market Mantra. हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सवाल पूछें सर। सर, ये वर्ल्ड बैंक में जानना चाहता हूँ, एक बैंक या अनेक बैंकों का समूह है, इसके अंदर IBRD, ICSID, IDA, इन सब का क्या करना है, और जो आपका टीचर बैंक का हिस्सा या क्या आता है, ये बताइए। Satish का कॉल क्लियर नहीं था, but what he's asking is World Bank one bank, or is it a group of banks like IBRD, IFCR? It's one single bank, and then obviously they have arms and departments, and including shareholdings, depending on which department they operate through. But the concept of World Bank still remains as one bank. To answer his question directly. Okay, and what I mean, typically people have these questions. What is the difference between IBRD, IFC, and IMF and World Bank? Yeah, see, I mean, IMF is a international monetary fund, which is different from World Bank in terms of what it needs to do and its objectives and things like that. It also depends on how they interact with sovereigns in terms of their delivery products and modules and all. But at the end of the day, to make it a very simple one-line answer, these are bodies addressing global fund issues of sovereigns in a bigger stance. Okay, and Satish, request you to be in a better line next time because we couldn't get your second part of your question. I think Virendra from Chennai has joined us back. Virendra, are you on line with us? Yes, sir. Good evening, sir. Market Mantra team. Good evening. Please put सर, मेरे पास ना कुछ टेलीकॉम सेक्टर पे शेयर हैं जो कंपनी अभी एनसीएलटी में मूव हो गई है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये शेयर आगे लिस्टेड रहेगा या और जब एनसीएलटी में रेगुलेशन के बाद क्या शेयर होल्डर को बेनिफिट होगा कुछ इससे? Now, of course, we can't discuss stock specific, although we know what stock he's referring to. But what happens when a stock goes into NCLT? Do the shareholders get anything? Because from this particular stock, I believe the lenders are claiming almost 50,000 crores, whereas the assets might not yield more than 30,000 crores. देखिए, should I answer in Hindi or English? What was it? I think he asked in Hindi, so it's better. तो typically निर्भर करता है, obviously जैसे आपने कहा कि उन्होंने खास करके कोई क्षेत्र का विशेष हम बता नहीं पाएंगे कंपनी का विशेष इस प्रोग्राम में, लेकिन मोटी तौर से एनसीएलटी में जब जाते हैं
और एनसीएलटी का क्लेम जब पूरा होता है निर्भर करता है कि कंपनी का स्थिति क्या है। कभी कभी ये भी होता है कि एक अलग से वे आउट निकलता है जहाँ पे कंपनी को समय दिया जाता है। तो इस वक्त उनका जो सवाल है कि डीलिस्ट हो जाएंगे कि स्टॉक, ये इस वक्त कहना मुश्किल है, बिकॉज एक प्रोसेस चल रहा है उस पर। ये जो स्टॉक है मतलब काफी दिनों से अपर सर्किट पे हिट कर रहा है, तो लोगों को काफी पसोपेश में आएगी क्या करें, बेचे रखे। लेकिन साथ में खुदरा निवेशक होने के लिए अगर सुरक्षा का अगर बात करें अपना निवेशकों का, तो मैं मानता हूं कि ज्यादातर खुदरा निवेशक टेलीकॉम क्षेत्र में पैसा अपना डुबा के बैठा हुआ है। तो ऐसा स्थिति में उनको एक स्टॉप लॉस का कॉल लेना चाहिए। और आप उतना एक्सपोजर का अगर एपेटाइट है तो थोड़ा बेशक और रुक सकता है, लेकिन ऐसे स्थिति में वोलेटिलिटी ऐसी स्थिति है, और आप सबको पता है कि टेलीकॉम क्षेत्र का हालत बहुत ही खराब है। और खास करके जिस तरह का डिमांड टेलीकॉम सेक्टर में अलग से आया हुआ है, जो सरकार बोल रही है कि शायद वो फीस कुछ दिन बाद वो लेंगे, तो अभी तक किसी को पता नहीं कि छवि किस तरह जाने वाले हैं। और ऐसा स्थिति में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना निवेश के ऊपर ध्यान दें। अगर आपको 6 महीना 1 साल का निवेश है तो शायद उस समय अवधि का अंदर आप अपना फायदा वहां पे नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना कॉल लेना है कि आप क्या करना चाहते हो। जी, यहाँ पर आपने टेलीकॉम सेक्टर की बात हो रही है, तो अभी दूरसंचार कंपनियों ने अपने टैरिफ्स में कॉल दरों में बड़े वृद्धि की घोषणा की है, बढ़त की घोषणा की है। क्या इससे कुछ असर पड़ेगा टेलीकॉम कंपनियों के प्रदर्शन पर? क्योंकि जब कॉल्स की जो रेट्स बढ़ी हैं तो नेचुरली रेवेन्यू उनका अच्छा होगा। देखिए, सवाल मूल तौर से विशाल ये है कि रेवेन्यू में जब उन्होंने प्राइसिंग में वृद्धि की है, टॉप लाइन में बेशक असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बॉटम लाइन यानी कि मुनाफा या घाटा में कितना अलग से उसका फर्क पड़ेगा और कैसा स्थिति जाके रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा चिंता का एक डिबेट का भी विषय है। तो हम सीधे अर्थ से ये नहीं बोल सकते कि अगर प्राइसिंग बढ़ा है तो हाँ, टॉप लाइन में बेशक वृद्धि होंगे, कहीं ना कहीं वहां पे आय बेशक बढ़ेगा, लेकिन बॉटम लाइन में जाके किस हद तक, क्योंकि हमें बैलेंस शीट इनका जो है, ये बैलेंस शीट सिर्फ प्राइसिंग के ऊपर निर्भर नहीं करते, उनका डेट सर्विसिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और कौन सा कंपनी का किस तरह का डेट सर्विसिंग का स्टेटस में इस वक्त है, और मदर कंपनी या ग्रुप कंपनी से कितना सपोर्ट उनको मिल सकता है उस डेट कवर सर्विस को कवर करने, उसके ऊपर भी निर्भर करेंगे। बेशक सिर्फ प्राइसिंग के ऊपर दौर करके मैं नहीं मानता हूं कि टेलीकॉम कंपनीज का जो इस वक्त जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। गणेश फ्रॉम चेन्नई इज जॉइंड अस लाइव। गणेश, प्लीज पुट योर क्वेश्चन to join. Good evening, everybody at Market Mantra. See, once the central government disinvests large PSUs, what is the impact for the retail investor? Thank you. See, it depends on where exactly you're invested in. If you're invested in the PSUs which are going for disinvestment, I believe there is a strong cause of good management, better management coming in. Good maybe is not the right word. In fact, whatever PSUs were disinvested almost 15 years ago, they've all been outstanding performance. Exactly. Them in these stock markets. Exactly. So that's one part of the story. Whether disinvestment would have a good important impact in the market, whereby you can invest in overall good stocks in the market, that's something which needs to tell, because disinvestment is a major policy call for this particular government, NDA government, and I believe this also shows to a great extent the dedication of the government to bring in the deeper impact in terms of moving away from companies which the government don't want to manage. So there is a twin answer to your question. That is, if it's company specific profits or good performance you're looking forward for, I believe yes, there would be some positives out of this disinvestment. And overall stock markets, yes, disinvestment will certainly have a positive impact in terms of the perception of the government and how it's performing. जी, अनिमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग अनिमेश, क्या सवाल है आपका? सर, ये जो मार्केट में अभी लिक्विडिटी क्राइसिस बनी हुई है, ये इसके नियर टर्म में इसके ठीक होने के क्या आसार हैं, और जो इससे हमारी जीडीपी दर अभी थोड़ी स्लो हुई है, 4.5% पे आ गई है, तो ये क्या ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, और इसके द्वारा सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे मार्केट में लिक्विडिटी की जो पोजीशन है छोटे और मझले उद्योगों के लिए वो इम्प्रूव हो सके? थैंक यू। देखिए, सरकार का द्वारा प्रयास क्या है वो तो पिछले 5 महीने का सरकार का रिकॉर्ड कार्ड हमें बताना पड़ेगा आपको। सवाल ये है कि आपने लिक्विडिटी की बात की है, बेशक मार्केट में एक अलग से कहीं ना कहीं जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स है मार्केट में, उस वजह से लिक्विडिटी में कहीं बहुत कमी आया, क्योंकि खास करके बैंक्स जो है वो अब थोड़ा क्वालिटी लोन्स में पैसा देना चाहते हैं जी। और मैं मानता हूँ एट द एंड ऑफ द डे ये जो लिक्विडिटी क्राइसिस का जो इशू है ये शायद कुछ दिन तक और चले, एक छोटा सा शॉर्ट टर्म इशू है ये, लेकिन ब्रॉड या लॉन्ग टर्म इशू की अगर बात करें, क्वालिटी ऑफ लोन्स अगर अच्छा होता है तो उपभोक्ता के हिसाब से हमें आपको सबको फायदा है,
क्योंकि हमारा बैंकिंग क्षेत्र में अगर स्ट्रेंथ आएंगे तो कल का दिन में वो हमें लोन्स देना, प्रोजेक्ट्स में अच्छे से निवेश करने में उनका रुचि बढ़ेगा और साथ में उनका कॉस्ट भी कम होंगे। तो ऐसा स्थिति में ये जरूर है कि जीडीपी ग्रोथ में जो कमी आया हुआ है, जो नरमी आया हुआ 4.5% का, वो बेशक मार्केट के ऊपर असर करेगा। अलग से जो प्रोजेक्ट्स लग रहा है उसमें शायद वो कमी आएंगे, लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा है कि अगले 2 तिमाही यानी कि जनवरी से लेकर मार्च और अप्रैल से लेकर जून का जो 2 तिमाही है उसमें ये उम्मीद किया जा रहा है थोड़ा बहुत मार्केट में स्फूर्ति वापस आएंगे। और स्फूर्ति का साथ साथ निवेश का जो रुचि है वो भी वापस आएंगे एनवायरमेंट के साथ। Shailendra from Panipat, please hold. We'll be back after a very short break, and Jayanta will continue taking questions on Market Mantra. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जी, ब्रेक पर जाने से पहले शैलेंद्र हमारे साथ लाइन पर बने हुए थे। हाँ शैलेंद्र, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी नमस्ते जी, शैलेंद्र बोल रहा हूँ पानीपत से जी। ये गोल्ड के बारे में जो आपका अभी क्या राय है, गोल्ड कमोडिटी, और दूसरी बात कि गोल्ड में हमें ETF में यदि इन्वेस्ट करना हो तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए और कहाँ पर गोल्ड ETF के बारे में जाना चाहिए? देखिए गोल्ड एज अ कमोडिटी, हालांकि अभी थोड़ा कीमत में उसमें नरमी चल रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि आपका जो निवेश का अवधि है गोल्ड के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान रखते हुए और साथ में आपका जो रिक्वायरमेंट्स है, ये दोनों चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हुए एज अ मीडियम टर्म प्रोडक्ट मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा है। और दूसरी सवाल है गोल्ड ETF का बारे में बात की। आप एक वेबसाइट में, कोई भी वेबसाइट में जाके थोड़ा सर्च करिएंगे, आपको मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कौन कौन सा प्लेटफॉर्म्स में जाके। You'll have to open a demat account first for that. तो आप तो डीमैट अकाउंट खोल के फिर आप वहाँ पे जाके ETF का खरीदना बेचना कर सकते हैं। Pankaj from Delhi has joined us. Pankaj, welcome to Market Mantra. Hello, good evening, sir. Good evening. Very warm from my side. Thank you, sir. Please go ahead. My question is regarding physical shares. Mm-hmm. From 1950s onwards, my forefathers and others, my parents have invested heavily in the stock market. जी। And it is in the physical mode. It has not been transmitted. Now both are not alive, and I am facing lot of hardship in transferring this, and very heavy this thing charges somewhere charges are heavy, like every dividend indemnity. Somewhere investment is less than 1,000, it becomes unprofitable. Pankaj, is the value of your investment more than 2 lakhs or less than 2 lakhs? Less than 2 lakhs. And another, ceiling limit should be for succession should be of number of shares. It should not be like that 2 lakhs, because you don't nowadays when the sanction is 41,000, it is not in material, not of use for having limit of in rupees value. Isn't it? It should be value, shares value. Okay, we got that. Pankaj ji, I think, is called earlier as well. What he's saying is about since April now it's been forced dematerialization of all shares. So a lot of people who are holding shares, Physical shares, they are having shares, a cost issue in terms of going back and doing for the the demat transmission form. basically has a limit of 2 lakhs. More than that, there's a lot of cost of documentation, and so what? Well, I guess as a feedback, only the finance ministry can take a call in So what to do somebody with is the cost. listening to us from Yeah, so SEBI or there's finance nothing to ministry. comment on that. I mean, this is an important feedback, I guess, which they can take up in terms Because of how to- it's a lot of callers have called us Exactly. and had the same. But then kind of- to give a fair due to SEBI and all, there is a cost, huge cost to transfer this physical shares and bring them into a platform of a demat platform. So we can't override them also and believe that to make it cheaper and all. But maybe it's a call of the probably they regulators. could look at when there's a transmission of intergenerational Exactly. transmission. Probably they could Exactly. take a lighter view of that. और अब नजर डाल लेते हैं आज एशियाई और यूरोपीय बाजारों के प्रदर्शन पर। अधिकतर एशियाई बाजार आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। चीन के विनिर्माण क्षेत्र के उत्साहजनक सर्वेक्षण सामने आने से निवेशकों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाएं कम हुई हैं। आंकड़ों के मुताबिक चीन में कारखाना गतिविधियों में पिछले 7 महीने में पहली बार वृद्धि देखने को मिली है। सरकार की ओर से प्रोत्साहन उपायों के बाद घरेलू मांग में भी वृद्धि हुई है।
जापान के निकेई में आज 0.1% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.4% की मामूली बढ़त देखी गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% ऊपर और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। यूरोपीय बाजारों में आज अंतर्दिवसीय कारोबार मिला जुला रहा। समाचार लिखे जाने तक लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का कैग दोनों 0.1% की बढ़त दिखा रहे थे, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.2% नीचे कारोबार कर रहा था। Tinku from Delhi has joined us. Tinku, welcome to Market Mantra. हेलो सर। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। टिंकू जी, हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आप किसी बेहतर लाइन से अगर कॉल करें दोबारा कोशिश कीजिएगा, हम आपको आपके सवाल का जरूर जवाब देना चाहते हैं। Meanwhile, let's look at the rupee today. The Indian rupee today settled 8 paise higher at 71 rupees and 66 paise against the US dollar. The domestic unit appreciated amid hope that Reserve Bank will go for another rate cut in the ensuing RBI policy review meet this week. A quick question: what do you expect? 25 bips or more or less? So I was guessing it's a few hours ago, so let it happen. Okay. जी, गुरुग्राम से पंकज फोन लाइन पर हैं। हेलो Hello. जी, पंकज जी। Yeah, good evening, sir. Sir, I have a question regarding investment in stock market. Is there any guideline for what should be the ratio for the book value to the share value, and share value to book value? Because is there any limiting rule for that? PBV is a ratio that a lot of people see instead of PE these days. Exactly. So it depends on what exactly you want to check at. I mean, there are lots of, not only two ratios, there are lots of other ratios also which people try to observe. PE was very popular. PE was very popular and all. So it all depends on how, the time and the environment, and specifically the sector also, which you're looking forward to discuss and focus on. But in terms of guidelines, I mean, it's basic academics in terms of what you would like to look at before you do your own investments. And also, typically, analysts, given the herd mentality, they move on in. As you said, PE was the, favor of the season, or maybe 2 years, 3 years, or even 5 years ago. Those things keep on shifting and changing. So, Ashok ji, coming back to your question, I think it depends on what you would like to look at in terms of, the company. But then let me also tell you, a very rudimentary policy of investment. I mean, these figures are fine in terms of directing where you are, but stock markets means stock market. There's a term called irrational exuberance, So that's something which you should look up to, because that's where people make money finally. I mean, if everything was as per how PE multiples are valuing up and things like that, then it would have been a perfect informative knowledge sector, and everyone would have, either lost money or gained money in some specific stocks. So I guess at the end of the day, is that little irrational experience which actually may allow people to make money heavily or sometimes even lose money. So I think that instinct you must have if you're investing in the stock market. तो कोई basic thumb rule नहीं है. There's no guideline PB So there's no, value. I mean, I think as an investor you should never, I mean, if you talk to one of the largest Some of the investors- best performing stocks are at Exactly. 40-50 PE right now. So, जी, और मोदी नगर से अब अशोक कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो। जी, अशोक जी। हाँ, चौधरी साहब को नमस्कार। बहुत बहुत बड़े दिन के बाद बात हो रही है। मेरा फोन नहीं मिल रहा था, मैं ट्राई कर रहा था लगातार। सर, एक जी अशोक जी, यहाँ आपको हम जी अशोक जी में जो ये गड़बड़ हुई है, अब डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को क्या करना चाहिए और मार्केट का ट्रेंड क्या लग रहा है मेट्रो के बारे में, लेकिन पहले इसका बता दीजिए कार्वी और क्या गड़बड़ है। That's a क्या big घोटाला हो question. गया? The Carvey stockbroking, almost 2,800 crores was the estimated value of the fraud that SEBI is now upgraded that level. So what should an investor who has that money, because for a few weeks I was speaking to some people, they're not able to take out their securities or their money. So what should they do? Should they transfer to another demat? Well, typically, I guess that's the immediate call of the day, and I guess at this point of time, with an ongoing investigation and every single day some new information coming out, we are not that well informed to discuss Carvey and what investors at this point of time, even participants of Carvey, should exactly do. So I guess if you have alternative options, you can move out immediately. But I think it would be absolutely wrong to guide or misguide on Carvey at this point of time. Okay, so let's look at another commodity that's a very important commodity that we all keep looking at. That's oil. Oil today jumped, supported by hints that OPEC and its allies may agree to deepen output cuts at a meeting this week, and as rising manufacturing activity in China suggested stronger demand. Brent crude prices were trading around $62 per barrel, and WTI prices were at around $56.60 per barrel when reports last came in. We have Satish Chandra from Delhi online with us. Satish, welcome to Market Mantra. Good evening, sir. Good evening. I am having two small questions. Go ahead, sir. Number one is these physical shares
is there any deadline till date it can be dematerialized? So the deadline is already over. It was once extended from December to April. Now the deadline is over. So right now all shares have to be dematerialized. So did you have a second question as well? I think we've lost Satish ji. We have जवाहर दलाल मुंबई से हैं अब हमारे साथ. हेलो. हाँ नमस्ते सर. जी नमस्ते जी. हाँ मेरा ये सवाल है कि अगर सैलरी पर्सन है जिसकी इनकम 5 लाख के ऊपर है यानी 10 लाख के करीब है और उनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है तो उनके लिए पीपीएफ ठीक रहेगा या एनपीएस ठीक रहेगा? जी बेशक पीपीएफ मैं मानता हूँ एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत अच्छा है, खास करके इतना कम उम्र में. आप मेरे ख्याल से 25 से 30 साल की उम्र में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो. और हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली में और खुदरा निवेशक जो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे है, एक पीपीएफ का हिस्सा हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट साइकिल में होना चाहिए. और सीधे सवाल का जवाब ये है कि हाँ बेशक एक पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहा है उसमें पीपीएफ का हिस्सा बेशक रखिए. और पीपीएफ में एक लिमिट है 1.5 लाख सालाना और एनपीएस का एक स्पेशल बेनिफिट है 50,000 का. तो इनफैक्ट दोनों का कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ का उनका खास करके दिस और दैट था तो इसमें हम लोग पीपीएफ ही सजेस्ट करते हैं. और टैक्स बेनिफिट्स तो है ही उसके साथ जुड़े हुए. बहरहाल अब बात कर लेते हैं सोने की. तो दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 161 रुपए सस्ता होकर 38,718 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया. कमजोर मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकवाली के कारण सोनों की कीमतों में ये कमी आई है. चांदी भी 425 रुपए टूटकर 45,730 रुपए प्रति किलो पर दर्ज हुई. We have Gaurav from Ghaziabad online with us. Gaurav, please go ahead with your question. I think we seem to have lost Gaurav at this point in time. What do you look at it? 5th and 6th Vienna, there's a meeting of the OPEC countries. Do you anticipate the prices to be around $62 or do you think there will be some surge or some drop? See, I have a contrarian opinion and I believe that the oil prices are likely to go down a bit more, specifically given the fact that they're talking of a global slowdown peaking at around March. Now, if that is happening, I don't see oil prices to go on unless there's a severe cut or there's some attack in some oil producing country somewhere. So keeping those sorts of severities aside, at this point of time, I am sure oil prices are going to remain soft at this point of time. So between $60 to $65, I mean, it's fine, but it may go on a bit more. The Aramco IPO, will that have any impact? Let's see. I mean, so it depends on what exactly they bring on the table. But as I said, the chances of oil remaining soft are much more prevalent at this point of time than spiking up from here. और जो सोने में जो अब ये जो गिरावट का रुख देखा जा रहा है, सस्ता होता जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ सोना थोड़ा बहुत ओवर प्राइस बेशक बीच में हो ही गया था. 40,000 तक जब पहुंच गए थे, मेरे ख्याल से 39,000 to 40,000 तक जब पहुंच गया था. लेकिन ये है इस वक्त स्टिल इज अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट टूल. अभी भी है बिल्कुल इसमें. और अब समय हो रहा है, कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करना होगा. Thank you, Jayanto, for joining us and answering these questions so patiently. Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock close on a flat note. Sensex settles at 40,802. Nifty ends at 12,048. Brent crude prices hover around $62 per barrel and gold prices slip to 38,718 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. That's all we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए. अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे. वो तो ये बात है. हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए. बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जाने. समझकर इन्वेस्ट कर. Market Mantra brought to you by National Stock Exchange.